part of the video. So in yesterday's video we have seen what was the solution of the equations given. तो हम लोगों ने कल तीन तरीके के equations देखे थे, तीन तरीके के solutions देखे थे in fact. So I told you first of all the solutions was divided into the consistent solution and inconsistent solution. In the consistent solution it was divided into the again two parts, which was the unique solution and the infinite number of solution, and when the remaining thing was the no solution. तो मैंने आपको जैसे कल बताया था कि उसके हिसाब से हम कैसे सम सॉल्व कर रहे थे, वो हम लोगों ने ऑलरेडी कल के वीडियो में देख ली. Now we will see how to plot the graphs and how we can come to know which type of equation, which type of solution does the equation have. So let's see with the help of a question here. Draw the graph of the following equation: x plus 3y is equals to 6. x plus 3y is equals to 6. अभी केवल एक ही इक्वेशन दी है फॉर एन शॉर्ट कि आपको केवल ग्राफ बना करके दिखाना है. इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो लेट अस सी कि पहले हम इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं, तब उसके बाद हम दो इक्वेशंस लेकर के देन वी विल सी हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन. सो लेट्स कम एंड सी कि हमको सबसे पहले ग्राफ कैसे निकालना है, ग्राफ कैसे बनाना है. तो द इक्वेशन गिवन इज x plus 3y is equals to 6. तो सबसे पहले हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए ग्राफ बनाने के लिए. एटलीस्ट वी शुड हैव टू कोऑर्डिनेट्स. तो कोऑर्डिनेट्स आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ x and y. The values of x and y. We need to solve the given equation by substituting it. Let's see. If suppose in the given equation I kept x is equals to 0. x को अगर यदि मैंने ऊपर 0 रखा तो I will keep in the equation x 0. It will become 3y is equals to 6. What will be the value of y? It will be 2. The value of y will be 2. Since the value of y is equals to 2, so one of the solution comes out to be, we write in the coordinate in the form of x comma y. My x is 0 comma my y for this x is 2. My y for this x is 2. तो मेरे को एक कोऑर्डिनेट मिल गया जो कि मैं ग्राफ पे प्लॉट कर सकती हूँ. तो 0 comma 2 is one of my coordinate. Now keep y 0. Keep y 0. Keep the y 0 in the equation. In the same equation, you will get 3 into 0 will be 0 is equals to 6. So x comes out to be 6. So when y is 0, x is 6. ये कंपल्सरी है कि सबसे पहला टर्म x का लिखें और दूसरा टर्म y का लिखें. तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए. At least we should have two coordinates to plot the graph. Now we will see how to plot the graph. तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए थे 0, 2 एंड 6, 0. अब देखते हैं कि इससे हमको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है. मेक द ग्राफ. यू कैन मेक इट इन योर ग्राफ नोटबुक. दिस इज आवर एक्स एक्सिस. डोंट फॉरगेट टू मार्क द एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. वाई एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट and x-axis is also known as abscissa. ठीक है. Now we will plot the first point 0, 2. What is there at x place 0? 0 है मतलब कि कौन सी लाइन पर 0 होगा, y axis की लाइन पर. And 0 and the value for y is 2. So this is the point which shows you 0, 2. The next point is 6, 0. What is 0? Y is 0. Y will be 0 on x-axis. And the 6 for x. So this will be 6, 0. If you join these 2 points by the straight line, then you can say that the line which is being formed, this is the line for this equation. This is the line for this given equation. So this is nothing but the graph which has been plotted for the given equation. तो अभी अपने को एक ही इक्वेशन दी है तो अपन ने एक ही लाइन प्लॉट करी. ऐसे अपने को दो इक्वेशंस दी होती तो we would have plot two lines. If there are 3 equations, 4 equations, those many number of lines. तो जितनी इक्वेशंस आएंगी हमको ये ग्राफ पे ऐसे प्लॉट करनी है. I hope this must be clear कि how we have to plot on the graph. First step we have to take out the coordinates. Taking out the coordinates is hit and trial method. Take out the coordinates, and those coordinates you need at least 2 coordinates to be plotted on the graph. Take those 2 coordinates and plot it on the graph. So this is how the equation looks like. This is how the graph looks like for the given equation.
I hope this must be clear. Now we will be moving ahead for the 2 equations and 3 equations. Now let us see the second sum of the how to solve it graphically. So we have the question is solved graphically. We have again 2 equations given. X minus y is equals to 1, 2x plus y is equals to 8. 2x plus y is equals to 8. सबसे पहला स्टेप कोऑर्डिनेट निकालना है दोनों इक्वेशंस का. तो दोनों इक्वेशंस का कोऑर्डिनेट निकालना है तो देख लेंगे इधर x minus y is equals to 1. सबसे पहले क्या निकालना है कोऑर्डिनेट निकालना है. अभी कोऑर्डिनेट मैंने लास्ट वाले जो सम में बताया था पूरा एक एक स्टेप बताया था. व्हाट आई विल डू इज I will make a box over here. So this will be the value of x and this will be the value of y. If I keep x0 in the equation, the value for y is, चलो रख के देख लेते हैं, minus y is equals to 1. So y will be nothing but minus 1. So if x is 0, what will be the value of y? Minus 1. Let us keep y 0. If y is 0, what will be the value of x? The value of x will be 1. The value of x will be 1. Now similarly these are the 2 coordinates. मैंने बोला एक इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट हमको 2 coordinates तो चाहिए. Now we will see the coordinates for the next equation. The next equation is 2x plus y is equals to 8. 2x plus y is equals to 8. Let's see, again we will do with the same procedure. Let keep this as x, this is y. Keep x is equals to 0. x को क्या ले लिया? x को 0. x को 0 रखा मतलब y will be 8. Keep y 0. Keep y 0. y को 0 रखा तो x will be 4. So can you see I have taken out the coordinates for both the equations. I have taken out the coordinates for both the equations. अभी मुझे क्या करना है, ये एक एक करके coordinates I need to plot it on the graph. Let's see how we will plot it on the graph. जैसे कि हम previous sum में भी देख चुके हैं. This is our x-axis. This is our y-axis. So the maximum which we need to plot is 8. So 1, 2, 3, 4, 5 till 8 on both axes. It looks good. Fine. Now we will plot this equation 0 comma minus 1. 0 comma minus 1 means it goes down. It goes down. Here in this it will be minus 1. So this is the point of 0 comma minus 1. 0 comma minus 1. The next coordinate is 1 comma 0. This is 1 and y is 0. Y remains 0 on x-axis. So this is nothing but 1 comma 0. 1 comma 0. Now you can see this is the line which is passing through both the points. This is the line which is passing through both the points. So this line is nothing but x minus y is equals to 1. X minus y equal to 1. I hope till this point it must be clear. The plotting of one equation, which we did in the last sum also. Now let us plot the second equation on the same graph. 0 comma 8. What it is? 0 comma 8. 0 comma 8 means 8 on y-axis. So this will be 0 comma 8. This will be 0 comma 8. 0 comma 8 and 4 comma 0. So this will be 4 comma 0. This will be 4 comma 0. Now join these 2 points by the straight line. These 2 points by the straight line. Can you see this line is the graph for the equation 2x plus y is equals to 8. 2x plus y is equals to 8. ये वाली जो लाइन है वो ये वाली इक्वेशन के लिए, ये वाली जो लाइन है ये वाली इक्वेशन के लिए. Can you see they are intersecting at this point? They are intersecting at this point. तो जब ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं तो मैंने कल बताया था ऐसे सॉल्यूशंस को कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. इफ दिस इज नोन एज यूनिक सॉल्यूशन then let us plot it. Since I have not plotted it on
the graph, actual graph, so I may get the values here and there. Maybe the value for x at the intersection point, I need to take out the values at the intersection point. Let's see what are the values at the intersection point. So this is nothing but the x comes out to be 3 and y comes out to be 2. So the coordinates at the intersection points comes out to be 3, 2. At coordinates it comes out to be 3, 2. चेक कर लेते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है भी या नहीं. कल हमने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब रेशियो ऑफ a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. The ratio of a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So what is a1 in this equation? a1 is 1, a2 is 2. What is b1? b1 is again 1, b2 is also 1. Let's take 1 upon 2 is the ratio of a1 and a2 is equals to 1 upon 2. The ratio of b1 upon b2 is 1 upon 1. So from here we can see a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So it is clear from the equation itself, the equation have unique solution, and we can come to know the equation have unique solution. This is clear to you all? So this is the way how we can solve the graph, how we can solve the equations graphically by using the graphs. This line is not that proper because I haven't drawn it on the actual graph. If you draw it on the actual graph, आपका x 3 आएगा and y 2 आएगा, and this will be the lines which I have been drawing. तो ये जो पूरा method है, इस method को बोलते हैं graphical method. So this is how we solve it by using graphs. The given two equations can be solved. तो ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि solve the equations graphically and tell the value of x and y. The value for x and y comes out to be 3, 2. That means the value for x is 3 and for the value of y is 2. So अभी तक जो हम x and y की वैल्यू निकालते आ रहे थे, we were taking out by elimination method, substitution method or cross multiplication method, and this is how we solve it by graphical method. I hope the graphical method must be clear to you all. In the next sum, we will see how to take out the shaded areas. How to take out the shaded areas. So there can be 3 equations also. Even we can plot 3 equation, 4 equation and 5 equation. That is the benefit of graphical method. That is the benefit of graphical method. आपको अगर यदि ये 3 इक्वेशन दे दी जाए और एलिमिनेशन में बोला जाए तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो इसीलिए हम लोग ग्राफिकल मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं. इवन बड़ी क्लासेस में जाकर के भी हम लोग ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. So we will take the next sum now. Now the next question is solve the equations graphically and shade the region bounded by the lines. Again there are 2 equation givens. 2x plus 3y is equals to 6. 4x plus 6y is equals to 24. सबसे पहला स्टेप कि we have to take out the coordinate for the given equations. Now let us take out the coordinate for the equation 2x plus 3y is equals to 6. छोटा वाला ट्रिक, छोटा बॉक्स बनाएंगे x and y. If I keep the value for x is 0, 0 रख दिया, the y value will be 6 upon 3, that will be 2. Keep y 0, y 0, so this will gone, x will be 6 upon 2, that will be 3. 6 upon 2 that will be 3. तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए. दूसरी वाली इक्वेशन देखते हैं. देखो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने, x and y. अगेन कीप x is equals to 0. x 0 रखा तो y की वैल्यू क्या, 24 divided by 6. 24 divided by 6 is nothing but 4. Keep y as 0. Keep y as 0. If you keep y as 0, the value for x will be 6. The value for the x will be 6. Can you see the given equations? The coordinate of the given equations has been taken out. अब क्या करना है, सीधा साधारण है, बहुत सिंपल मेथड है. आपको कुछ नहीं करना होता, केवल दो इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एंड वो कोऑर्डिनेट्स को हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है. चलो देख लेते हैं इसका ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो कैसा आएगा. अगेन दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis, this is origin 0, 1, 2, 3, maximum 6 है. ठीक है. 0, 2, 0, 2 will lie here. 0, 2.
3, 0 will lie here. 3, 0. So this is the line which is passing through from these 2 points. तो ये वाली जो line है, this is representing which equation? 2x plus 3y is equals to 6. 2x plus 3y is equals to 6. Now let us plot this equation. 0, 4. 0, 4 is nothing but this. 0, 4. And this is 6, 0. 6, 0. Now let's plot equations कैसी आ रही हैं? The lines are parallel to each other. एक और चीज क्वेश्चन में पूछी गई थी, shade the region bounded by these lines. ये लाइन के बीच का रीजन को शेड करो जो कि इससे बाउंडेड है. So the shaded region will be this region. Shaded region will be this region. And this is the equation of line. ये जरूरी होता है कि आप लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखो ताकि मालूम कैसे पड़ेगा कि ये लाइन ये ग्राफ या लाइन कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट द इक्वेशन. सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ्स मैटर्स अ लॉट. So you can see here, this is a line which shows 2x plus 3y is equals to 6, 4x plus 6y is equals to 24. Now you can see the lines are parallel to each other. If the lines are parallel, which solution it should be? It should be no solution. It should be no solution. हमने कल के वीडियो में देखा था. चलो देख लेते हैं. यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई 2, a2 की वैल्यू आ गई 4, b1 की वैल्यू is 3, b2 की वैल्यू is 6. Now we will take out first of all the ratio for a1 upon a2. The ratio for a1 upon a2. The ratio for a1 upon a2 is 2 upon 4, which is nothing but 1 upon 2. Similarly, take out the ratio for b1 upon b2. That is 3 upon 6, that is again 1 upon 2. As I have told you in the last video, जिन्होंने भी last video नहीं देखा है वो पहले last video को अच्छे से देख लें ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए. So a1 upon a2 की वैल्यू आ रही है 1/2, b1 upon b2 की भी वैल्यू आ रही है 1/2. कैन आई से a1 upon a2 इज इक्वल्स टू b1 upon b2. अगर ये इक्वल होते हैं तो हमको किसके पास जाना है? c1 upon c2 के पास. तो द c1 फ्रॉम द इक्वेशन इज 6 एंड c2 फ्रॉम द इक्वेशन इज 24. नाउ टेक आउट c1 upon c2. दैट इज 6 upon 24 विच इज 1 upon 4. क्या c1 upon c2 a1 और b1 b2 के इक्वल है? नहीं है. सो द इक्वेशन tells us a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and not equal to c1 upon c2. This situation arises only when the equations have no solution. So हमको ग्राफ से भी मालूम पड़ा हमारे कि हमारी इक्वेशंस जो थी वो पैरेलल आ रही थी. कल मैंने बताया था कि ग्राफ पैरेलल आता है. नाउ आई हैव प्रूव्ड कि हाँ ग्राफ पैरेलल आता है अगर हमारी इक्वेशंस नो सॉल्यूशन है. नो सॉल्यूशन का मतलब है हमको x और y की वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं मिल सकती. वी कांट फाइंड इट आउट द वैल्यूज फॉर x एंड y. इट हैव नो सॉल्यूशन. So are you clear with the concept how to solve graphically and what are the types of and how can we relate it with the solution of the equation? आप ग्राफ बना करके भी पता कर सकते हो कि हमारा इक्वेशन कैसा है. अगर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं then it is a unique solution. ग्राफ पैरेलल है no solution. ग्राफ कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर then intersecting solution. I hope the graphical method must be clear to you. And if you have any doubts you can write me in the comment section. I'm open to you all. So I think the content which I have given to you must be helpful. And if you have not seen the previous video for this, please see the previous video, then you will be able to understand this video full in detail. So I hope the content is quite sufficient to you all. If you like my content, please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.